कंपनी का है चालू भी नहीं एक्सपेरिमेंट हो गए फर्स्ट पार्ट का हो गया था सेकंड पार्ट हो गया था थर्ड हो गया था सिर्फ एक मिडिल पार्ट बाकी ओके और पहले के पार्ट भी हो गया था तो आपका सिर्फ it's a pollution chapter. Okay, I've changed the text. To be pollution. Okay, option अपन ने पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट होगा नहीं. Okay, so we'll just see that the test is being changed to pollution part. वो तो आएगा. Okay. So we go ahead with the next part. I think in terms of your photosynthesis only, हमने photosynthesis just quickly revise what we have learned. We talked about was the plant producers. उसके अंदर we talked about was the chlorophyll, the vital pigment. Chlorophyll is present in the organelle known as chloroplast. Within the chloroplast are present your coin-like structure known as thallopides, which are stacked one above to form the granum. They are interconnected to form intergranal lamellae. Within the thallopides or within the granum are present your chlorophyll molecules. There are 9 subtypes of chlorophyll. Out of that, A and B are the most abundant presently type of chlorophyll molecule. For chlorophyll to be formed, it requires your light as well as too much of light destroys chlorophyll. Light not there, then also chlorophyll not be formed. That was the first part. Then they given you is in terms of the regulation and opening of closing of stomatal part. Stomata का structure दिया हुआ है, and they given you 2 theories. One is the potassium ion theory and one is the sugar concentration theory. ये explain कर दिया था. वही start करना. ठीक है. उसके बाद का part I think they have given you is process of photosynthesis. Then they have given you is adaptation and all these things. उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है is the experiment 6.10. अपन experiment खत्म कर दिए थे. So we have to start with the part in terms of your the theories regarding the opening and closing of the stomach. I think
स्लाइड शो पर क्या चल गया है स्लाइड शो अरे इधर ना okay so now already you describe about this part so just going to the part there are photosynthetic pigments क्या हुआ What was it? There are principal photosynthetic pigments: chlorophyll, chlorophyll A, bacterial chlorophyll, chlorophyll B, C, D, carotenoids, phycobilins, phycoerythrin, phycocyanin, carotenoids, and xanthophyll. ये सब के सब accessory pigments हैं which help in the process of photosynthesis, but cannot itself produce photosynthesis processes. ये actual है जो photosynthesis को reaction को catalyze करता है. Then where is chlorophyll in the plant? So I think in the leaf के अंदर within the section of the leaf अगर देखते हैं तो there is upper epidermis, there is lower epidermis. तो ये आपका upper epidermis, lower epidermis. इनके बीच में there are mesophyll cells which are known as palisade mesophills and which are known as spongy mesophills. दोनों में chloroplast present है, पर सबसे ज्यादा chloroplast present होते हैं palisade mesophyll cells because they are parallel to the sunlight. Sun के parallel है, सबसे ज्यादा light इसी के cells के ऊपर गिरते हैं. So maximum chloroplast present in this type of cells. Then spongy chloroplast present, structure of a stomata through which the air, also chloroplast is present in the guard cells. So एक chloroplast leaf के अंदर है, दूसरा chloroplast also present in the guard cells of the stomatal part. It is also present in the stem of an immature plant or green stems. Maybe the chloroplast is present, chlorophyll is present. Then going ahead, diagram of the structure of a chloroplast. This is the chemical structure not required for us. This is the diagram which is expected to be drawn. Double layer दिखाना important है. वो dome shape, two dimension वो सब जरूरत नहीं है. This is the absorption spectrum of chlorophyll. Chlorophyll is working in the blue and red light. तो उस red और blue light में सबसे ज़्यादा उसको activity दिखाई देता है. Too much of light destroys chlorophyll. Next comes is regulation of stomatal opening. Now this is the part from where we are going to start. See the structure of the stomata. So schematic structure is this part. The stomata exactly look like this. Outer layer is known as epidermis. Within that there is a bean-shaped structure known as guard cells. Now this guard cells outer side is a thin wall, whereas the inner side is having a thick wall. Now because of this difference in the wall, thin wall and thick wall. You know why okay, so there is a thin walled and a thick walled cells. Now, what is the importance of this thin walled and thick walled? So, because the outer part is thin walled, water can move easily into this area. So, पानी अंदर आने के लिए thin walled है. But the inner wall is thick because if it is thick, then it can bend. अगर bend हुआ, तो it is like this. ये close है, bend होने के वजह से pressure बाहर की तरफ जा रहा है. And as a result, the stomata opens. When the water is withdrawn, it closes. So that is how the opening and closing of stomata takes place. Am I clear, everybody? Now, transpiration is the price which plant pays for photosynthesis. Whenever transpiration is occurring, that's occurring for the photosynthesis to take place. So it is the price paid for photosynthesis. Transpiration is the price which the plant has to pay for photosynthesis to take place. इसके ऊपर application based question comment वगैरह आता है. Okay. Then opening and closing of stomata. There are two theories given in your books: potassium ion concentration theory and sugar concentration theory. Sugar theory आपको है नहीं. Okay. It is a discarded and heavily. Potassium ion है, पर हमें दोनों पढ़ना है because बिना उसके वो समझ में नहीं आता. So it's a very simple theory by which we are able to understand the potassium ion exchange theory. Shall I go ahead? Yes.
अननेसेसरी क्यों मेरा मुंह खुलवा रहा है तेरे लिए? अच्छा तो तेरे वाले बोलूंगा नहीं मैं। Now, potassium ion concentration theory. Potassium ion समझने के पहले we go on to the sugar concentration theory. Now, what is sugar concentration theory? Then just for understanding part, guard cells, within the guard cells what are present? अभी अपन ने पढ़ा. Within the guard cells are present chloroplast. Which process occurs in chloroplast? What is the end product of photosynthesis? Glucose. Can I say sugar? Yes. Sir. यहाँ पे sugar form हुआ. सर वापस स्क्रीन स्विच कीजिए. हो रहा था क्या? Escape. कितना कीजिए? क्या था अभी? हुआ? हो गया. Okay. कितना? 20 मिनट. 15 मिनट. देखिए क्या होता है? पहला रीजन बता दे फिर मैं बता दूं. फिर वो रिक्शा अंकल बोले पास में लेके नहीं आया. रिक्शा लेने के लिए आप जाते हो. मुझे बात बुलाया, मुझे को बोलने की जरूरत नहीं. Okay. Now, sugar is formed over here. Due to sugar formed over here, then this forms a hypertonic area. Hypertonic system बनेगा. So this is hypertonic. Compared to this, what will be the cells outside? Hypotonic. So where will the water move? Outside. ज़्यादा नाश्ता केला. एकदम ऊंचा ना. I can take care of it properly. सर भारी रखा है. Okay. So sugar is formed. As a result, water starts entering into this. This results into the cell becoming turgid and the stomata open. पानी अंदर आया तो ये ऐसे होगा. Water fills, so this becomes turgid. ये बड़ा होगा तो यहाँ पे bend आएगा. Okay, and the stomata opens. Now, during the night time or when there is the water scarcity in the plant, simply the water will be leaked out because पानी की requirement और कहीं ज़्यादा important है rather than the stomatal part. So simply the water starts flowing out, leaks out. As a result over here,
the stomata closes. Okay. सर यहाँ पे ओपनिंग के बारे में ज्यादा फोकस किया है, क्लोजिंग के बारे में किसी में भी दिया नहीं, चाहे पोटेशियम आयन हो चाहे इट इज वाटर. वैसे भी ग्लूकोज तो आपको है नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पार्ट आई एक्सप्लेन दिस. सो विद द डायग्राम फॉर टेक अबाउट डे टाइम पे plant photosynthesis forming glucose, osmotic pressure of guard cell increase due to glucose. So as a result, what happens? Endoosmosis occurs in the guard cells. So water starts moving inside the guard cells. Guard cells become stomata. Clear with this? Yes, sir. This is how the water is entering into the part. The red dot expresses the glucose. बहुत ज़्यादा glucose होने की वजह से water starts from the epidermal cell moving into the guard cells and the stomata opens. Next. अच्छा, potassium ion concentration theory. Now we'll try to first understand sugar concentration theory discard क्यों किया गया. Why was is now discarded theory. Then later on, as our science knowledge improved with a lot of modern techniques which have been brought about, they realize क्या अगर sugar concentration या sugar का part leaf के अंदर कम कर दिया, stop कर दिया, still it was not affecting opening and closing of stomata. So it directly proved that sugar is nothing to do with the opening and closing of the stomata. So as they were researching, they realized that there is a potassium ion. अगर इसको stop किया या इसको block कर दिया गया, it definitely affects the opening and closing of the stomata. So based upon that, they identified it as the potassium ion, which helps in opening and closing of the stomata. So based upon this part, daytime पे plant photosynthesis same था, वहाँ पे photosynthesis हो रहा है, वहाँ पे क्या बन रहा था? Glucose. Glucose ultimately breaks down to give me energy. यहाँ पे भी वही है, सिर्फ ऐसा उल्टा होता है. क्या प्लांट वहाँ पे फॉर्म्स द ग्लूकोज, ग्लूकोज की वजह से एटीपी बनी, एटीपी बना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ. व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. So potassium ions are pumped into guard cells. तो वहाँ पे पोटेशियम आयन अंदर आना चालू हो जाते हैं. Due to which osmotic pressure of the guard cells increases. Due to which endoosmosis takes place. Due to which the guard cells become turgid. Due to which stomata opens. तो यहाँ पे सिंपल है, ग्लूकोज के वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, उसके वजह से टर्जिडिटी हुई, उसके वजह से स्टोमाटा ओपन हुआ. ये अपन ने ग्लूकोज थ्योरी में पढ़ा. यहाँ पे थोड़ा अलग कर दिया. ग्लूकोज की वजह से एनर्जी मिली. दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द गार्ड सेल टू टेक इन पोटेशियम आयंस, जिसके वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ा, द ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा. दिस लीड्स टू वाटर बीइंग टेकन इनसाइड एंड एज अ रिजल्ट द गार्ड सेल्स open or swells to open up. That is how the part is explained. So more acceptable is the potassium ion and the discarded is the sugar concentration theory. कोई doubt है? This is what happens in the part. Water again from moves outside, but यहाँ पे potassium ion, the one which are given in the pink color would be potassium ion, तो वो move कर रहा है, सब लोग का. Then नाइट टाइम में पोटेशियम आयन लीक आउट ऑफ गार्ड सेल्स. इसमें कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने. जैसे जैसे पोटेशियम आयन लीक्स आउट ड्यूरिंग द नाइट टाइम, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस, एक्सोस्मोसिस फ्रॉम गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, स्टोमाटा क्लोज. चलिए ये बुक का पार्ट है बट नॉट अ वेल एक्सप्लेन्ड पार्ट. रीजन मतलब सिर्फ रात को स्टोमाटा क्लोज होता है, पूरे दिन में कभी क्लोज होता ही नहीं है क्या? इट इज क्लोजिंग एट टाइम आल्सो नो. अगेन यहाँ पे भी सेम है. During the time when the water scarcity is there, obviously the plant will require water from the another important part. जहाँ पे main चाहिए वहाँ पे देगा, and it will remove the water from the least important areas. The least important area would be guard cells. तो सिर्फ potassium ion के अलावा other factors also contribute to the opening and closing. Humidity, temperature, उसके हिसाब से भी वो regulate होते रहेगा. So that completes the potassium ion concentration theory. Then sugar concentration अपन ने already कर लिया. Process of
photosynthesis. Next heading दिया हुआ है. This is a cross section of a leaf. Upper epidermis, lower epidermis, the pellucid mesophyll, spongy mesophyll, the xylem column which is having water and minerals are brought over here. This goes into the pellucid part. Pellucid has more of chloroplast which will help in the process of photosynthesis. So pellucid में spongy mesophills में हो रहा है. Somatosome which CO2 enters. Then यहाँ से CO2 enter होगा. यहाँ से water और minerals आएंगे. Chlorophyll already present in this guard cells, in this pellucid cells. So chlorophyll is required for photosynthesis. Water is required for photosynthesis. Sunlight ऊपर से आ रहा है. Okay, and carbon dioxide taken by the somatal part. These are 4 reactants which are reacting to give me the products of photosynthesis. And वही दिया हुआ है. Sunlight, water and minerals going to the chloroplast in the mesophyll cells के अंदर chloroplast है और यहाँ से carbon dioxide enter कर रहा है. This is a reaction of photosynthesis. 6 CO2 plus 12 H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives me glucose plus water plus oxygen. Okay. Now, in the old versions या in the lower classes या किसी CBSE के टेक्स्ट बुक्स वगैरह का रेफर करोगे उसमें आपको 2 रिएक्शंस मिलेंगे. 6 H2O. Then we are not writing 6 H2O. Okay, वहां पे same reaction होगा. 6 CO2 plus 6 H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives me 6 H12O6 plus water नहीं होता है. 6O. Done. But that's not the right because वो 12 water molecules सबके सब use होते हैं और 6 नए बनते हैं. So अगर आप 6 लिखोगे तो it is like assuming the सब प्लांट को सिर्फ 6 ही चाहिए होता है. 6 मिला तो कुछ बनेगा ही नहीं वापस. और ऐसा नहीं है. वो 12 यूज कर लेता है और 6 वापस reform करवाता है. Okay, so this is the proper reaction of photosynthesis. Now, the entire reaction is broadly divided into 2 main categories. Events occurring during photosynthesis. The first event is known as light reaction, or also known as light dependent phase. Then, now this is what happens in the light reaction. I'll be going one by one slowly to make you understand this part. Light reaction, जिसे अपन कह रहे हैं या light dependent reaction, it is divided into these 2 parts. Now, जब ये पहली बार स्टडी किया गया, जो आपने पहला रिएक्शन देखा था, then that's the summary of photosynthesis reaction. That's not the actual reaction. Actual reaction आप 12th में पढ़ोगे जो नंबर जोड़ा है, and it's a multiple step reaction. यही कुछ 15-20 स्टेप का होगा. ये 6 स्टेप का 4 स्टेप के आसपास है. इसके बाद ये बनने के लिए और 10-12 स्टेप या 20 स्टेप का है और इसके बाद इस प्रोसेस में और भी बहुत सारे हैं. ये सब मिला के फोटोसिंथेसिस होता है और ये सब पढ़ोगे आप 11th स्टैंडर्ड. If you take science, if you take biology, साइंस तो रखते हो, बायो में नहीं लिया तो. So अगर बायो लिया होगा तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा और अगर मेडिकल करना है तो झक मार के पढ़ना. कोई ऑप्शन नहीं. That is the most part which is focused into the NEET वगैरह, इस पे ज्यादा फोकस किया है. Easy है, इतना टफ नहीं. एक बार पढ़ने जाओगे तो इजी लगता है. Now, what actually happens in the first step? First step is activation of chlorophyll. Chlorophyll function is to trap the sunlight. ये अपन ने लोग से पढ़ते आ रहे हैं. So it absorbs the sunlight. The moment it absorbs sunlight, यहाँ पे एरो के ऊपर सनलाइट आना चाहिए था, क्या नहीं है. Just for understanding part, chlorophyll in the presence of sunlight gets into excited state. Chemistry में I hope you might have studied something known as activation energy. So any molecule or any atom which receives the energy, it is going into a state known as activation energy.
and it start releasing a electron. वो खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और उसके बदले में वो प्रोटॉन, it becomes a positively charged ion. Exactly same thing. Chlorophyll receives sunlight. As a result, it goes into a excited state. That is activated हो जाता है and start releasing a electron. So अगर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसका चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, CHL प्लस. इतना समझ में आ गया? This is the first step. At the same time, children, again हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड. इन रियलिटी दिस ऑकर्स सेम टाइम टुगेदर. एक जगह पे ये, एक जगह पे ये, ऐसा हो रहा है. तो सेकंड स्टेप में देयर इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. एग्जैक्टली सेम है. सी वहां पे इलेक्ट्रिक करंट ब्रेक्स द वाटर इनटू कन्वर्ट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ पे ये लाइट करंट. Okay, so in the presence of light, water is broken down into 4H plus 4E minus plus O2. Again, O2 सिर्फ लिखते हैं. ये रिएक्शन अपने बुक में लिखा है, इसके लिए हम लिख रहे हैं, बाहर कर रहे हैं. No other things involved into it. पर practically if I talk, O2 इस रिएक्शन में नहीं बनता. Okay, it's not formed over here. This O is again forming an acid oxygen जो एक मल्टीपल स्टेट ऑफ रिएक्शन में जाएगा एंड तब उस 20 स्टेप या 10 स्टेप को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन बनता है. सो आपको अगेन वो नहीं पार्ट है. सो वी आर जस्ट सेइंग एट द एंड कहीं ना कहीं क्या बनने वाला है? O2 बनने वाला है. एम आई क्लियर? नाउ सिंपल मैथ्स में अपन वो इक्वेशंस करते हैं. फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट दिस. तो वैसे ही है. From above 1 and 2. Now, what is common in these two reactions? एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा then because can this reaction occur without light? तो जब इनको स्टडी किया गया था, इनके लिए नाम देना था. They was to give some name. बहुत सोचने का मैं, अरे इन दोनों में एक चीज कॉमन है. Light is required. So the name was given as light reaction. This is the old name of the part. Light reaction. यहाँ तक किसी को डाउट है? Now, from 1 and 2, what are we getting? Electron जो रिलीज होता है is accepted by electron acceptor. In this case, आपके बुक में लिखा है it is ADP. Adenosine diphosphate, which combines with inorganic phosphate. So ADP plus PI लिखा है. ADP plus PI. Then हम बोलते वक्त भले लिखते हैं, बोलते वक्त इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिखते हैं, पर लिखते वक्त PI लिखते हैं. अब वो केमिस्ट्री जो कोई पता है कैसा क्यों लिखा जाता है, कि वो IP क्यों लिखते नहीं है, PI क्यों लिखते हैं. बट अपने लिए सिंपल है. ADP प्लस PI. वहां पे इलेक्ट्रॉन लिखा नहीं है. तो लिखते नहीं है अपन वहां पे, हम दिखते नहीं है इलेक्ट्रॉन, पर इट इज देयर व्हिच इज कंबाइनिंग अलोंग विद द ADP एंड PI टू फॉर्म adenosine di. It is a energy currency of the cell. तो एक ATP बना, दूसरा वहां पे H plus ions है. So this H plus is accepted by a hydrogen acceptor molecule known as NADP. Most targeted question for the exam. Give the full form of nicotine amide adenine dinucleotide phosphate. उसके अंदर H डाला तो बन जाएगा डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन. सिर्फ हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा NADPH. हाइड्रोजन निकालोगे तो बन जाएगा NADP. Now 1 NADPH लास्ट प्रोडक्ट. हाइड्रोजन किसने एक्सेप्ट किया? NADPH. क्या कन्वर्ट हुआ? NADPH. 1 NADPH is
इक्विवेलेंट टू 3 ATPs. वहां पे मेंशन करना 1 NADPH is equal to 3 ATPs. So children, moral of the story is what? At the end, if I go with this whole setup, then इनमें यूज क्या हुआ? सनलाइट. कन्वर्ट किसमें हुआ? सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो यहाँ पे लाइट कन्वर्शन हुआ, मतलब एनर्जी का कन्वर्शन हुआ है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. Am I clear? Yes. This is what light reaction is about. Then comes the next part. What is the next part? The dark reaction, also known as light independent phase, also known as Kelvin cycle. Okay, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है. I think Kelvin cycle, biosynthetic phase, and many other parts. Okay, most famously known as your light independent or biosynthetic phase. अब मैंने जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है. It was there in your syllabus 8 years back, 8 to 10 years back. उसके बाद जब वो निकाल दिया गया तो टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन लिखे थे, पर वहां पे वो नोट लिखते थे, the above reaction is for your knowledge but not for your syllabus. 3-4 साल के बाद जब ये वापस रिवाइज हुआ, हर साल होता है, उसके 3-4 साल के बाद, the last 4 years के बाद में ये वो भी निकाल दिया, मतलब उन्होंने वो भी रखा नहीं. Okay, so this is just for your knowledge part. I am put this part. Then यहाँ पे अब इस साइड पे फोकस करना. Have I used carbon dioxide? Have I used water? Yes. Have I used sunlight? Yes. Chlorophyll? Yes. बचा सिर्फ CO2. CO2 is reduced in the presence of energy. Energy यहाँ से आया. The energy is formed for this reaction. It is reducing carbon dioxide, ATP, NADPH. In the presence of a substrate, again not required, RUBP, ribose biphosphate. आपको सिर्फ बता रहा हूँ. एक substrate है जो plant के अंदर ही होता है. Okay? In the presence of an enzyme, Rubisco. यहाँ पे थोड़ा correction है, मैं नाम नहीं दिया. मतलब अगर सिर्फ आपको नोट डाउन कर रहा होगा तो. Then ये लिखते वक्त बहुत सारे बुक्स में ऐसे मिलता भी है लिखा हुआ, which is technically wrong. आपको हायर लेवल पे इसका प्रॉपर मिलेगा. लिखते वक्त RUBIS कैपिटल O कैपिटल लिखा जाए, उसका सिग्निफिकेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज C stands for कार्बन डाइऑक्साइड एंड O stands for ऑक्सीजन. इसका रिलेशन है इसके लिए. सो important भी यही, it is the maximum present enzyme on this earth. सबसे ज्यादा एंजाइम को इस दुनिया में है तो वो ये है रूबिस्को. सो रूबिस्को एंजाइम कैटलाइज करता है टू फॉर्म द ग्लूकोज. ये प्रोसेस जो है ये साइक्लिक है, मतलब CO2 आया, ATP आया, NADPH आया, RUB कंबाइन हुआ, ग्लूकोज बना, फिर वापस बाहर निकला ADP, NADP और RUBP. फिर वापस नया CO2 और ATP आएगा, फिर वापस ये साइकिल करते रहेगा टिल ग्लूकोज फॉर्म. ये पहली बार डिस्क्राइब किया था केल्विन ने, इसके लिए इसको केल्विन साइकिल कहा गया. और उसके पहले उसका नाम दिया गया डार्क रिएक्शन. नाउ व्हाई डार्क रिएक्शन? सिंपल था, व्हेन दे केम टू दिस पार्ट कुछ तो नाम देना था. बहुत दिमाग लगाया, इसमें तो कॉमन था लाइट, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो किसने बोला यार क्यों दिमाग खोलना है, जस्ट गिव ऑपोजिट नेम. सो इट जस्ट अ नेम गिवन फॉर नेम सेक, डार्क रिएक्शन. इज इट लाइक दिस? क्या प्लांट को अंधेरे में रखना तभी ग्लूकोज बनेगा? मतलब सुबह प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता. It was just name given. Later on it was realized a proper name, light dependent phase. Can this occur without light? No. So light dependent. Can this occur without light? Yes. Can this occur with light? Yes. लाइट है तभी भी होगा, लाइट नहीं है तभी भी होगा. इससे कोई लाइट से मतलब नहीं.
So that is why it is known as light independent phase. Without it, No, sir. sure. Okay, अक्षरन आपके बुक में कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं ज्यादा तब टारगेट करेंगे. Application of chlorophyll में chlorophyll in the presence of proton gives me this reaction. This made combines with ADP plus phosphate to give me ATP. Addition of phosphate to any molecule is known as phosphorylation. Okay? अगर phosphate किसी भी molecule को अटैच करता है तो अपन उसको बोलते हैं phosphorylation. इस केस में किसके साथ में वो अटैच कर रहा है? Phosphor मतलब the phosphate is adding up to ADP in the presence of light. इसके लिए इसको बोला जाता है photophosphorylation. Is it written? Yes. Okay. Now, is ATP produced in our body? Yes. In which organ? Mitochondria. Mitochondria, known as a. Okay. तो हमारे में भी ATP बन रहा है. Yes, sir. It will be also formed by same process. AMP combines with phosphate to form ADP. उसके साथ और एक phosphate अटैच बनेगा तो बनेगा ADP. So can I say हमारे में phosphorylation हो रहा है? हो रहा है. Addition phosphate हो रहा है ना? तो हो रहा है. But is it occurring with the light? No. किसके साथ हो रहा है? In the presence of oxygen. Then हमारे में या एनिमल्स में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ऑक्सीजन के वैसे हुआ इसके लिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. प्लांट्स में यही प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन. Am I clear? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Okay. Next. Photophosphorylation, oxidative phosphorylation, photosynthesis, respiration. Conversion of glucose into starch and other chemicals. The fate of glucose during photosynthesis. अगर आप देखोगे, so photosynthesis में जो भी glucose बना, it could be forming fats, it could form amino acids, proteins that can be converted into starch. Majorly, it is first converted into starch, a process known as polymerization. ये लिखा है वहां पे. ओके, हमने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? मैंने प्रॉपर वर्ड यूज किया है. हमने ये वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? मैंने सबको नहीं पढ़ाया था. गुड. सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विथ माय क्वेश्चन. How is starch formed? Glucose combines with glucose, combines with glucose, combines with glucose, plus combines with glucose, plus glucose, plus glucose. Chain of glucose goes on to form. So chain of nucleotide goes on to form. So DNA is a polymer of. So the process is known as polymerization only. वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया था पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमर. मैंने डायग्राम में डाला था. सिंगल यूनिट इज नोन एज मोनोमर. दो है तो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रा और पॉलीमर. Polymerization is exactly same. When a huge chain is formed, then you say it as polymerization. So polymerization is nothing but where the glucose is converted into starch. Okay, that is known as polymerization. That completes the part. उसका बाद कुछ काम का नहीं है अपने लिए.
Then children directly next heading is given as adaptations in leaf for photosynthesis. So pehla, large surface area. The greater surface area, more will be the stomata, more will be the light received, so more will be the photosynthesis. Cuticle and upper epidermis. Okay, then अगर आप इस diagram में देखोगे, this is the cuticle part and the upper epidermis. The thinner the cuticle transparent भी है और thinner भी है. So what happens? More light would penetrate inside it, and obviously more water and etc. thing can be taken in. That is CO2 will also enter much faster. So all this leads into what we say as faster would be the photosynthesis, or more would be the photosynthesis. Then leaf arrangement. The leaf should be at a right angle to the axis of the plant. अगर ये plant है ऐसे, तो right angle मतलब ऐसे, मतलब parallel to sunlight. So more light will be receiving by the leaf. So more would be the photosynthesis. Next, numerous stomata, more will be CO2 taken in, more will be the rate of photosynthesis. Thinness of leaves. So thinness of leaf, the thinner the leaves, rapid transportation will take place within the upper epidermis to lower epidermis. So things move faster, so obviously the photosynthesis also will take much at a faster pace. Then the chloroplast, obviously the more the chloroplast, more the photosynthesis productive. Extensive vein systems, so that water, minerals, everything can be moving faster to the required areas, and faster the transportation is exactly same like this part. It will bring about more photosynthesis. End result of the product of photosynthesis. चलो बकवास दिया गया है, ये खुद पढ़ लेना आप. Chapter का starting और end part वही है. So glucose, water, and oxygen is formed as the end product of the part. Glucose जो बनता है, it converted to starch and it is transported from one part of the body to the another part by a tissue known as phloem. Whereas water and minerals will move upward to the tissue known as xylem. ये I think खुद पढ़ सकते हो, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं मेरे. Factors affecting photosynthesis. सबसे पहला उन्होंने दिया heading as external factors और उसके बाद internal factor. So external factors में light intensity, carbon dioxide concentration, and temperature. Three factors are there. And water content. Internal factors में chlorophyll, protoplasm, and structure of leaf. Okay, a funniest part. Light intensity, carbon dioxide, temperature, and water content. इन दोनों का ग्राफ दिया है. आया ना? Yes. 2 मिनट दे रहा हूं. सिर्फ वो ग्राफ का कंटेंट था जो आपके यहाँ पे लिखा है, लाइट इंटेंसिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. मुझे एक पैराग्राफ लिखा है 5-6 लाइन का, वो सिर्फ पढ़ना है. Light intensity. आज किससे बार-बार डन? Yes, sir. समझ में आया? हाँ. क्या
सर एक सर्टेन पॉइंट तक लाइट इंटेंसिटी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट हो जाता है, फिर अगर लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, फिर वापस से एक बार बढ़ेगा तो दोनों जब फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा एंड लाइट इंटेंसिटी भी अफेक्ट Then the graph is very simple. एक light intensity है which is increasing, and at that time CO2 concentration is 0.03%, 0.02%. Okay, so at that 0.02% intensity of light increases, rate of photosynthesis increases. एक point पे आके वो stop हो जाएगा. So वहां पे मान लो light intensity एक point पे आ गया, उस टाइम पे CO2 कितना था 0.02, that's the saturation level. अब इसके बाद में कितना भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, the rate of photosynthesis will not increase. But if at that particular point I increase the CO2 concentration from 0.02 to 0.05, okay, अब उसके बाद मैं इंटेंसिटी वापस बढ़ाता हूँ तो मेरा वापस फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा till it becomes saturation to another point जहाँ पे उसका CO2 concentration का वैल्यू 0.05 है और एक लाइट इंटेंसिटी पर्टिकुलर लेवल पे आके स्टॉप हो जाएगा. उसके बाद में कितना भी लाइट बढ़ाऊं, the photosynthesis will not increase. उसके बाद में अगर वापस CO2 बढ़ाऊं 0.05 का 7 कर दूं तो अब नहीं बढ़ने वाला. So एक लेवल के बाद it would not work. Okay, अब the I said funniest part because इस पूरे 2 पॉइंट में उन्होंने कहीं पे एक्सप्लेन कुछ नहीं किया. They haven't explained at all anything about CO2 और लाइट का क्या रिलेशन आ रहा है इसका. Okay, so to understand that part again very specifically I am saying that is not required. आपके लिए है नहीं. Just for you to brief, I am explaining in that part. आया समझ में तो ठीक, नहीं चलेगा. Okay, so children, अब अपन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो आपकी बुक में दिया है, but not the same graph. Okay. Now, in the graph part, we find that this is the rate of photosynthesis and this is the intensity of sunlight. So, what is this point known as? zero. Also known as. So, what type of graph I should normally get if my intensity of light increases? Okay, straight line starting from the origin. Theoretically, मुझे ये मिलना चाहिए. आया ना? जैसे इंटेंसिटी बढ़ा, फोटोसिंथेसिस बढ़ा. प्रैक्टिकली मिल रहा है? नहीं. प्रैक्टिकली 0.0. मैं CO2 के बारे में अपन बात ही नहीं कर रहे. अपन सिर्फ लाइट पकड़ के ये मिल रहा है. So at this point, what is happening? There is a stoppage, plateau बन गया. समझ में आया? कोई डाउट है इस पार्ट पे? अब इसी ग्राफ को चेंज करते हैं. Instead of intensity of light, I go with the concentration of CO2. अब वहां पे भी सेम लॉजिक है. Theoretically मुझे स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए. As the CO2 concentration increases, my rate of photosynthesis increases. पर practically मुझे क्या मिल रहा है? वापस प्लेटो मिल रहा है. Okay? तो 0.5 नहीं, 0.032 पे भी आएगा, 0.05 पे भी आएगा. वो कंबाइंड इफेक्ट पे. अब एक ही फैक्टर देख रहे हैं. तो सिंगल फैक्टर में मुझे ग्राफ वही मिल रहा है. Okay? क्या एक पॉइंट के आगे वो प्लेटो बन रहा है. अब उसका रीजन क्या है? Then light is too much of light is harmful to the chlorophyll. तो बहुत ज्यादा लाइट होने की वजह से क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट होगा. So at one stage
क्लोरोफिल डिसइंटीग्रेट होने के टाइम पे क्लोरोफिल will shut down its function. Actually, it shut down its function और उसका function एक और होता है by accessory pigments. अपन ने स्टार्टिंग में देखा था carotenoids, phycobilins and many other pigments. Then ये काम करते हैं उसको absorb करना high intensity of light को और उसको पास करना क्लोरोफिल को. So क्लोरोफिल के पास एक स्टेडी लाइट जाता है और ऊपर हाईलाइट उनके पास जाते हैं. So at that time स्टेडी लाइट के वजह से वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. To put it in another way, I can give a very simple example. As tomorrow is holiday for everybody, most of us. तो अपन एक ये करते हैं. Tomorrow we'll all meet at 6 o'clock morning in the UT premises. We have some work. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ. So tomorrow 6 o'clock we are meeting in the UT premises, or I would say not UT premises, I would say sector 36 में भी रहता है, 35, 36. वहाँ पे खारघर में tallest building है, नवी मुंबई tallest building. Good. तो अपन उस building के यहाँ पे मिलते हैं सब लोग. Okay, and conditions are tomorrow we'll meet over there morning 6 o'clock. We'll go on the terrace of the building. We will enjoy, have party, but we are not going to study anything. अब वहां पे गए सुबह 6 बजे पर इंस्ट्रक्शन में कंडीशंस अप्लाई. नहीं, आपको एंजॉय करना है वहां पे, जो करना है करते हो. But the condition is from morning 6 o'clock till evening 6 o'clock. Okay, you will be on the terrace and you need to see the sun. अगर आपके आंख बंद हुए तो वहां से very simple. Learn. There is no rule. I should explain this part. So here, all of you come morning 6 o'clock. Okay, डर के आते हैं तो enjoy करना टाइम पर पार्टी वगैरह. सुबह आते हैं 6 बजे बैठ खड़े ऊपर गए. Can we see the sun? Yes. 6 o'clock को sun मारता है. Okay, they're able to see. बोला था याद है उसके लिए. Okay, now the moment you go upstairs 6 o'clock you see the sun. 6, 7, 8, 9, 10. 10 बजे तक शायद आप देख पाओगे. थोड़ा आंखें हो रहा है पर देख पा रहे हो. After 10 o'clock eyes will get irritated, redness होगा, शायद watering भी होगी. पर करे क्या, सामने जल्लाद खड़ा है. So, but there are some who are smart. Now, some of you are smart. They would wear sunglasses. Sir ने बोला देखना है. Sir ने ये नहीं बोला कि sunglasses नहीं पहन सकते. So what is the sunglasses doing over there? Exact relation. Your eyes is chlorophyll. Your sunglasses are accessory pigments. वो reduce करके eyes के पास में. And that is how you get a light. ये हुआ light का आंसर. CO2 का आंसर मैं देने वाला था पर अब मैं नहीं दे रहा हूँ. ये खुद ढूंढ लेना. या खुद ढूंढ लेना कि why CO2 will have that plateau. So इसके बाद का एक्सप्रेशन मैं नहीं दे रहा हूँ. So we go ahead with the next part, Chada. Okay, is in terms of there is no hard and fast rule. I should go beyond the syllabus. Okay, so I think you don't deserve, so I move ahead. I know there will be unfair for some of the girls who are sincere or some of the boys who are sincere,
पर अगर लगता है तो बाद में कभी मैं जल्दी आ गया तो आके वहां पे पूछ लेना. I would explain you there rather than explaining to idiots and donkeys over here. Okay, donkey भी नहीं भूखता, donkey भी थोड़ा better सुरीला होता है. Okay, so we go ahead to the next part is in terms of temperature. सर देखो डिस्टर्ब मेरा बार-बार. Okay, सीधा कान के नीचे बजा दे. पक्का क्या डिस्टर्ब हो रहा है ना, बजा दे. पहले मैं हाथ में सर तो चार्ल्स बोल गया कि तेरे पेरेंट्स ने कैसे थप्पड़ मारा था. पीवड़ा नॉट इंटर कर नो, शायद डैडी ने चप्पल से उठा के मार दिया. तो अपनी औकात भूल मत जाना. Okay, if that day Big Sir would not intervene, I would not intervene, no, would have been gone over here with the like hospital only. So better behave. Next is in terms of temperature. So when I say temperature, again I get a graph which is a common graph known as inverted bell. Okay, यहाँ पे इसको बेलजार ग्राफ भी कहा जाता है. और किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन टेम्परेचर हमें हमेशा यही ग्राफ मिलेगा, चाहे वो ह्यूमन बीइंग के हो, चाहे वो प्लांट के हो, चाहे किसी भी का हो, यही ग्राफ मिलेगा. बिकॉज at lower temperature, that is 0, the enzymes are inactive. At higher temperatures, the enzymes are फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं बोलते, डीनेचर्ड बोलते. डीनेचर्ड मतलब दे आर एक्चुअली ब्रोकन. ओके, एंड at the optimum temperature is the maximum rate of photosynthesis. In the case of the plant, the maximum being the 35 degrees Celsius. So that is the optimum temperature for plants to bring about photosynthesis. इसके नीचे अगर 0 पे है, and if you increase the temperature by double, like 0 to 10 लाया, 10 to 20, तो the rate of photosynthesis double. पर अगर 30 या इसके ऊपर गया तो वो डबल नहीं होगा, because then will start decreasing. We'll stop over here, continue. I think आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा. Review another minutes to me. एक तरह से क्यों रखी है? But I will आज ही और रोहित यही रहोगे? देख रहा था